बेटा आपने मुझे बताना है 10th C, which is the sex organ in your body. उसका क्या नाम है? सेक्स ऑर्गन्स। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है, 10th में हो, सब कुछ पता है, ठीक है। सो टेल मी द सेक्स, यू नो, मैं हिंट दे रही हूं आपको। द सेक्स ऑर्गन्स आर दोस which produce gametes, which produce sperms. Sperms are the male gametes, right? So now you tell me which are the sex organs in your body which produce male gametes, sperms. अच्छा चलो मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ, और हेल्प हम आपके करते हैं। वास डिफरेंस है, यूट्रस है, ओवरी है, टेस्टिस है। आउट ऑफ दीज विच आर द सेक्स ऑर्गन्स? थोड़ा सा नीचे करके बोलो। हाँ, जोर से जोर से। मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहा, पहले कितनी अच्छी आवाज आ रही थी आपकी। अच्छा ये ना, ये माइक रख के बोर्ड के पास जाके बोलो जरा, देखें शायद वहां पे आ जाए आवाज। गो नियर द स्क्रीन, स्क्रीन के पास जाओ, देखें। ये बोल नहीं रहा कि इसकी आवाज। अच्छा चलो पीछे चलो, पीछे चलो। चल मी, मैंने बताया वास डिफरेंस, दूसरा हमने बताया यूट्रस, थर्ड हमने बताया ओवरीज, फोर्थ बताया टेस्टिस। इन चारों में से कौन सा है सेक्स ऑर्गन्स इन यू? इट इज फोर, दैट इज टेस्टिस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म्स अब आपने ही बताना है मुझे, आर दे मोटाइल, they move or they are static? they move, they are static, क्या है? 1 की 2? yes, they move, right. with the help of आप ही बताइए, with the help of flagella की टेल की सीलिया? फ्लैजेला, टेल, सीलिया, सूडोपोडिया। sperms move with the help of tail. Very good, better, better, very good, very good. So let's do, humans are unisexual, males and females are separate. So males have male reproductive system which mature at the time of puberty. क्या होता है puberty में? The testes, they mature, start, सुनो सिर्फ, इधर सुनो everybody, 10th B इधर। So they start producing gametes, they start producing sperms at the time of, you know, puberty. ठीक है, testes mature हो जाती है, they start producing sperms, right? And then reproductive system does not consist of only testes, they consist of other parts also. So let's see that. एवरीबॉडी, ये कौन सा पोस्चर है? ये किसी बॉय का पोस्चर है। कौन सा पोस्चर है? साइड वाला। हमने साइड से जो है, ये मेल रिप्रोडक्टिव, फ्रंट से नहीं देख रहे हैं हम, साइड से देख रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या नजर आ रहा है? दिस इज, यू नो, दिस इज टेस्टिस। पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो, फिर हम डायग्राम बनाएंगे और क्लैरिटी से हो जाएगा। दिस इज टेस्टिस, देन टेस्टिस, दे आर, इस तरह से इसको कवर किया होता है, दैट इज, यू नो, दिस इज एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से एक डक्ट जाती है इन क्लास 8, यू से इट एज स्पर्म डक्ट, है ना? उस टाइम हम क्या देते हैं? स्पर्म डक्ट, विच कैरी स्पर्म्स, विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। बट अब हमने इसका साइंटिफिक नेम दे दिया, दैट इज वास डिफरेंस। यहाँ पे जो स्पर्म्स है वो खुद टेल की हेल्प से मूव कर रहे हैं। बेचारों को मुश्किल तो बहुत आ रही है क्योंकि कुछ फ्लूइड ही नहीं मिल रहा हूं, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेल। देन फिर वो कहते हैं हम बहुत ज्यादा नहीं मूव कर पा रहे, मर जाएंगे, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, हमने स्विम करना है, वी नीड सम फ्लूइड। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, दिस सिक्रीट्स अ फ्लूइड पार्ट जिसको हम क्या देते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। इसने क्या दिया? इसने स्पर्म्स को ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी दिया। स्पर्म्स यूज फ्रक्टोज,
ठीक है, फॉर एनर्जी। सो इसने क्या सिक्रीट किया, फ्लूइड मीडियम सिक्रीट किया। दूसरा, फ्रक्टोज बनाया, सो दैट द स्पर्म्स दे यूज फ्रक्टोज टू गेट एनर्जी। और भी न्यूट्रिएंट्स इसने स्पर्म्स को दिए कि नो आई एम विद यू, मैंने ये देखो तुम्हारे लिए फ्लूइड मीडियम बना दिया है, मैंने देखो तुम्हें ये सब चीजें एनर्जी के लिए दे दी है, तुम्हारी न्यूट्रिशन के लिए भी चीजें मैंने बना दी। सो स्पर्म्स आर थैंकफुल टू सेमिनल वेसिकल्स फॉर दिस, राइट। देन देयर इज वन मोर ग्लैंड, वो कहती है मैं भी कुछ इनके स्पर्म्स के लिए कुछ करूं, सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स ही क्यों करे। देन देयर इज वन मोर ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. It covers the urethra. I will draw a diagram, simple diagram, so that you should know each and everything very clearly. So there is one prostate gland, large gland है. It also secretes like seminal vesicles. इधर बेटा 10 थे, इधर बिल्कुल इधर, बाकी सब छोड़ दो. So it also secretes some nutritive fluid for the sperms, but maximum fluid is secreted by seminal vesicles. प्रोस्टेट ग्लैंड तो ओल्ड एज में जाके कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करती, ठीक। देन देयर कम, स्पर्म्स जा रहे हैं वास डेफरेंस से, इधर गए, यहां से इसने फ्लूइड लिया, देन यूरेथ्रा सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड लिया, एंड दिस वास डेफरेंस ओपन्स इन द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है, दैट इज द यूरिन पाइप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप आती है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, और जो ये वास डेफरेंस है इट ऑल्सो जॉइंस विद यूरेथ्रा, और अल्टीमेटली कौन सी डक्ट बन गई, यूरिनोजेनिटल डक्ट. फीमेल में ऐसी डक्ट नहीं है, सिर्फ मेल्स में है, बिकॉज द यूरेथ्रा, यूरिनो बिकॉज इट कैरीज यूरिन, जेनिटल बिकॉज इट कैरीज गैमीट्स. इधर देखिए 10th डी, बॉयज पीछे, एवरीबडी हियर. So, urinogenital duct because it carries both urine as well as gametes. Then this duct, it comes out, है ना? It comes out of the abdomen. Abdomen हमारा लोअर, जो हम जिसको पेट कह देते हैं हिंदी पंजाबी में, ठीक है, तो पेट का जो लोअर वाला हिस्सा है वो सारा एब्डोमेन वाला पार्ट है. तो ये एब्डोमेन से बाहर आ जाता है यूरेथ्रा, एंड इट इज कवर्ड बाय 2-3 layers of skin, muscles and blood vessels to form penis. अब ये देखिए यूरेथ्रा तो ये है, और बाहर जो है ये सारा क्या है, पेनिस है, राइट. So this penis is called as copulatory organ. Copulation because it makes contact with the female to pass the male gametes, right. जो यूरेथ्रा है उसको तो हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि उसमें गैमीट्स भी है, उसमें यूरिन भी है. बट द पेनिस इट इज कॉल्ड एज कॉप्युलेटरी डक्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन कॉप्युलेशन, मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल. अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, या मैं यहीं पे ही बना लेती हूँ. सो लेट्स ड्रॉ कि अब क्या है ये, ध्यान से आपने पहले देखना है. दिस इज स्क्रोटम, यहां तक, ये थोड़ा सा देखो, यहां तक जो है वो एब्डोमेन का पार्ट है. ये आ गई लेग्स का वाला रीजन आ गया, ये लेग्स हो गई. जो लेग्स के बीच में है दैट इज दिस इज स्क्रोटम, एंड स्क्रोटम, स्क्रोटम में क्या है, दिस इज, बातें बिल्कुल भी नहीं, दीज आर टेस्टिस. ठीक है, किसके कहां पड़ी है टेस्टिस, पहली बात तो मैंने कहा एब्डोमेन ऊपर चला गया, ये तो एब्डोमेन के बाहर है, लेग्स के बीच में है. सो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, राइट, यू मस्ट बी नोइंग, है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक रिवीजन की बात है. सो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, राइट, एंड प्रेजेंट inside, this is the sac of skin called as
स्क्रोटल सैक। ऐसे नहीं कि फ्रीली पड़ी हुई है, ये इसके साथ अटैच भी। टेस्टिस का क्या फंक्शन है? दो मेन फंक्शंस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये आपने लास्ट चैप्टर में किया है। सो टू मेन फंक्शंस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। देन स्पर्म्स बनाए तो टेम्परेरी कहां पे स्टोर हुए? ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला यहां पे टेम्परेरी स्टोर हो गए, इसको हम कहते हैं एपिडिडिमिस, फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। देन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर देयर अराइज यूरेथ्रा। ठीक है, और चलिए बाद की बातें बाद में इधर ध्यान। एंड यूरेथ्रा इज कवर्ड बाय अ ग्लैंड। जैसे ये यूरेथ्रा है, इट इज कवर्ड लाइक दिस, इट इज कवर्ड, इट इज enclosed by a gland called as prostate gland. ठीक है, ये क्या है? दैट इज योर यूरेटर्स। तो यूरिन आ रहा है, ये है यूरेटर्स। अब यहां से here the testis passes spawns the T बिल्कुल एकदम कोई, and here the spawns are temporarily stored and then it passes into sperm duct called as vas deferens. This is vas deferens. देखो अब स्पर्म्स ने जो है ना ऊपर एंटी ग्रेविटी जाना है, फ्लूइड तो चाहिए, राइट? तो यहां पर इसके साथ क्या फांसी ग्लैंड है? दिस इज सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल, जहां से फ्लूइड कहां पे आ रहा है? वास डिफरेंस में आ रहा है, राइट? एंड देन this seminal opens in the urethra. ठीक है, likewise here. एक से चलो बातें बिल्कुल भी नहीं। This is also seminal vesicle, opens in the urethra, and then urethra. अब यहाँ पे देखो, अब तो सब कुछ यूरिन भी ऊपर से आ रहा है, स्पर्म्स भी आ रहा है, तो यूरेथ्रा इज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट। बट रिमेंबर दैट ओनली वन थिंग पासेस एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि यूरिन के साथ ही स्पर्म्स निकल रहे हैं, नहीं। जब स्पर्म्स की इजैक्यूलेशन है तो यूरिन नहीं, और जब यूरिन के पासिंग है तो स्पर्म्स नहीं, राइट? देन दिस यूरेथ्रा
यहाँ पे और एक कूपर्स ग्लैंड आ जाती है एंड देन इट कम्स आउट। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा ये लेग्स वाला पोर्शन ये रब कर दी ताकि आपको कंफ्यूजन। ठीक है, सो दिस यूरेथ्रा कम्स आउट and it is covered by skin, muscles, etc. to form penis. ये सारा क्या है? This is penis. Right? So this is human male reproductive system. Again, दोबारा से मैं बता रही हूँ, testes are extra abdominal. लिखो जरा फटाफट से. Write down human male reproductive system. It consists of testes, one pair, epididymis, one pair, vas deferens, vas deferentia एक ही बात है, one pair। मैं SV लिख रही हूं, आपने पूरा लिखना है, सेमिनल वेसिकल्स, अगेन one pair, seminal vesicles, one pair, then prostate gland, पूरा लिखना है, मेरी तरह पीजी नहीं लिख देना है, prostate gland, one single, पेयर नहीं है, prostate gland single, urinogenital duct, one, urinogenital duct one, और उसके बाद इसी की कंटिन्यूएशन आ जाती है पेनिस, इट इज ऑल्सो ठीक है जी, डन। आई होप सबने लिख लिया। देन फर्स्ट वी कम टू टेस्टिस। टेस्टिस को हम क्या कहेंगे? दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। लिखो जरा, टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन, and it produces male gametes or sperms, and second is male sex hormone testosterone. Male sex hormone testosterone. Second point, testes are extra
abdominal. Testes are extra abdominal. आप बताएंगे why. So 10th A, प्रथम. प्रथम is there. आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ. Tell me, why testes are extra abdominal? वो हमारी फीमेल्स की तरह, फीमेल्स में तो ओवरीज बाहर नहीं है, फीमेल्स में तो ओवरीज जो है वो एब्डोमेन में. किसी और को मत देखो, इधर देखो, स्क्रीन की तरफ देखो, बाकी किसी से मत सुनो. हाँ, अब बताओ, याद है आपको कि नहीं पता? अच्छा No. थोड़ा, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 8th की बात कर रही हूँ. अच्छा, आपको ये पता है कि एब्डोमेन एज कंपेयर टू आउटसाइड कैविटी या स्क्रोटम हाई होता है कि लो होता है? डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया? चल बैठो बैठो, रखो माइक. एनीबडी हु कैन गिव मी दिस आंसर फ्रॉम एनी क्लास? बेटा जो एक हमने, यस. Testes are located outside the abdomen so as to lower the temperature for the production of sperms. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. तो जो एब्डोमेन है ना बेटा, उसका टेम्परेचर हाई होता है, और टेस्टिस कहाँ पे है? एक्स्ट्रा. इधर पहले, इधर देखो, लिखना बाद में. जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, स्क्रोटम है, उसका टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री लेस है एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी. इफ ड्यू टू, जब बच्चा बन रहा है ना बेटा, बन रहा है मतलब मदर के वूम्ब में है बच्चा, लड़का है, राइट, द बॉय चाइल्ड, राइट, इट इज ग्रोइंग इन द वूम्ब ऑफ द मदर. तो 5th मंथ में जो टेस्टिस जो है, बनती कहाँ पे है? एब्डोमेन में ही बनती है टेस्टिस, कहीं और नहीं बनती. ये नहीं कि स्क्रोटम में बन रही है, ना ना ना, स्क्रोटम पहले ही बन गया है, बट टेस्टिस कहाँ पे बनी? एब्डोमेन में बनी. और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी बॉय है, 5th मंथ जब उसकी एज है अंदर, तो वहां से टेस्टिस, नॉट आउटसाइड, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो देन टेस्टिस इट शिफ्ट इनटू द स्क्रोटम, बट ड्यू टू सम रीजंस, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे. सो ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम रीजन, sometimes in some cases the testes do not descend in the scrotum, testes remain in the abdominal cavity. तो अब क्योंकि हमारी हेल्थ साइंसेस बहुत इंप्रूव कर गई है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है डॉक्टर देखते हैं कि टेस्टिस तो बाहर नहीं आई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन का एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे टेस्टिस जो है वो, दैट इज ए सेपरेट प्रोसीजर, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड कर जाती है. बट अगर किसी गांव में कहीं पे ये नहीं पता, टेस्टिस अंदर स्टमक में ही रह गई, या स्टमक तो नहीं, हम कहेंगे एब्डोमेन में ही रह गई, राइट. So if the testes remain in the abdomen, they do not descend into the scrotal sac, then that male is sterile. उसमें sperms बनेंगे, but they get killed at higher temperature. तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, what will happen if the testes remain in the abdomen, if they do not descend into scrotal sacs? In that case, sperms will be produced, बनेंगे, but they will die, they will get killed due to high temperature of abdomen. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप सब, everybody write down, testes are extra abdominal, testes are extra abdominal because the temperature of scrotum is 2 degree less, approximately है, is 2 degree less than the abdominal cavity, 2 degree less than the abdominal cavity. Full stop करके, if due to some reasons, if due to some reasons the testes do not descend into, the testes do not descend into scrotum, comma,
the sperms will get killed due to high temperature of abdomen. The sperms will get killed due to high temperature of abdomen. ठीक है, तो अगर एक लाइन में क्वेश्चन एमसीक्यू आए तो फॉर थर्मोरेगुलेशन टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा एपिडिडिमस. नेक्स्ट पार्ट लिखिए एपिडिडिमस. ये हमने लिखा था, लिखिए एपिडिडिमस. It is present on the side of the testis. It is present adjacent to the testis and helps in temporary storage of sperms. Function है temporary storage of sperms. Next आ जाते हैं vas deferens. Next is vas deferens और ब्रैकेट में लिख लो sperm duct. It arises from the epididymis. It arises from epididymis and enters in the abdominal cavity. Enters in the abdominal cavity to join with urethra or urinogenital duct. To join with urethra, ब्रैकेट में लिख लो urinogenital duct. It is also called as genital duct. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में. It is also called as genital duct. As it transports sperms away from the testis. Genital ducts होती है जो गैमीट्स को टेस्टिस से या सेक्स ऑर्गन से दूर लेके जाती है. As it transports sperms away from the testis. Next point है the vas deferens receive the secretions of seminal vesicles. The vas deferens receive, लिख लो, ऐसी क्लैरिटी से बुक्स में भी नहीं मिलेगा और क्वेश्चंस क्लैरिटी से ही आते हैं. The vas deferens receives the nutritive fluid from the seminal vesicles and also from prostate gland. Both, full stop करके, both seminal vesicles and prostate gland provides nutrition to sperms. Both seminal vesicles and prostate gland provides nutrition to sperms and also provides fluid medium. Also provides fluid medium for the movement of sperms. For the movement of sperms. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. The urinogenital duct comes out of the abdomen. Comes out of the abdomen and is surrounded by muscles and skin having lot of blood vessels
covered by muscles, comma, skin, and lot of blood vessels to form penis. To form penis. The penis is the copulatory organs in males. Penis is the copulatory organ in males. Which pass sperms into female reproductive tract. Which pass sperms in female reproductive tract. अब जो है यहाँ पे देखो, you know, males pass out semen. पेनिस के थ्रू वो क्या निकालते हैं? सीमन. और सीमन में क्या है? स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा. स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा. स्पर्म्स तो आपको पता है टेस्टिस से आए. What is seminal plasma? It is the fluid secreted by seminal vesicles and prostate gland. पूरा लिखना है आपने. What is seminal plasma? Fluid secreted by seminal vesicles and prostate gland. तो यहां से बेटा इधर से क्या पास हुआ? सीमन. और एक बार में ये वैसे ही जनरल ही है. वन इजैक्यूलेट मीन्स वन टाइम में सीमन. वन इजैक्यूलेट 3 ml सीमन. याद रखने की जरूरत नहीं, ये इन जनरल बात है. 3 ml सीमन हैविंग 300 मिलियन स्पर्म्स. एक आधा स्पर्म नहीं है. 300 मिलियन स्पर्म्स. एक बार में सीमन में 300 मिलियन स्पर्म्स. ठीक है जी. आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि अभी मैं ये रब करूंगी तो ये सारा डिसअपियर हो जाएगा. एंड आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट. ठीक है जी. दोबारा से टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाए. यहां गए स्पर्म्स, टेम्परेरी स्टोर हुए. फिर यहां जा रहे हैं. यहाँ से सिक्रीशंस आ रही है, फ्लूइड आ रहा है, स्पर्म्स यहाँ जा रहे हैं. देन दे एंटर इन यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से स्पर्म्स आए पेनिस में, और पेनिस से स्पर्म्स बाहर. ठीक है. देन देयर इज नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखो. इट इज एब्डोमिनल, present in the lower abdominal area called as pelvis. Female reproductive system present in lower, write down, present in lower abdominal area called as pelvis. Second point, in females there are separate duct for urine and for embryo. Write down. In females there is separate duct for urine and embryo. Embryo ही तो बाहर आएगा. Eggs तो as such बाहर नहीं आते. Therefore no urinogenital duct. Therefore no urinogenital duct.
ठीक है, अगर बना सकते हो तो फटाफट से बनाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ बना लेती हूँ, जल्दी से बना लो। दिस इज ovaries. Just a minute. हाँ जी सर। But child is saying something. Please. दोबारा से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, रिपीट करूं? फीमेल्स का ही? हाँ, मैं बता रही हूँ बेटा, आप बना, पहले डायग्राम बना लो, फिर साथ साथ मैं रिपीट करती हूँ कि इन फीमेल्स, राइट डाउन, इन फीमेल्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंट्रा एब्डोमिनल। पहली बात तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंट्रा एब्डोमिनल, इतना कि याद रखो, ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट, नो यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फीमेल्स, नो यूरिनोजेनिटल डक्ट, कॉमन डक्ट नहीं है। No urinogenital duct in females, as there are separate ducts for urine and for the embryo. As there are separate duct for urine and embryo. ठीक है? This is uterus. These are fallopian tubes. Uterus के अंदर there is a thick uterine wall. बना लोगे? है तो वही चीज है, मैंने तुम्हारे सामने बना दी है ताकि फटाफट से तुम। These are ovaries. ओवरी का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, these are fallopian tubes or female genital duct. Transport sperms, I'm sorry, transport egg away from the ovary. Next point लिखिए, the fallopian tubes unite with each other. The fallopian tubes unite, फ्यूज कर रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है, to form a distended, खुला मतलब चौड़ा, distended sac like structure called as uterus.
The thick inner wall of the uterus, the thick inner wall of the uterus, whose thickness changes each month, whose thickness changes each month, is called as endometrium. Is called as endometrium. The narrow opening of the uterus, the narrow opening of the uterus is called as cervix. Is called as cervix, which opens in a canal called as vagina. Next point, the cervix and vagina together forms birth canal. The cervix and vagina together forms birth canal. It forms passage for the birth of fetus, birth of baby. बेबी यहीं से बाहर आता. सेकेंड है forms the passage for menstrual flow. menstrual cycle हमने लास्ट चैप्टर में किया था. So menstrual flow भी यहीं से बाहर आ रहा है. So this is the female reproductive system. And third forms the passage for sperms also. Sperms भी तो यहीं से ही जाएंगे. Forms the passage for sperms. ठीक है. ये जो एंडोमेट्रियम है हर मंथ थिक होती है, prepares itself for the implantation, for the embryo to be implanted. But अगर fertilization नहीं होती, implantation नहीं होती, this much of the endometrium it sloughs off, बहुत thin हो जाती है. And जो उसके cells टूटते हैं, बहुत सारे blood vessels टूटते हैं, that all forms the menstrual flow which comes out of through the birth canal or through vagina. ठीक है जी. So this is about female reproductive system. Then next is fertilization. So what happens? The male. Extended time is over then. Sir, बस 2-3 मिनट. Will take 2-3 minutes. I will leave the class then. बस ये वाली slide explain करते हैं. So remember that during copulation, the male release semen in vagina of female. The male, लिखते जाना जो चीजें नहीं पता. Male release semen in the vagina of the female. Vagina की contractions के कारण, motility of the sperms के कारण, the sperms move through cervix
uterus and then into fallopian tubes. राइट, एंटी ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट, किसकी हेल्प से, टेल की हेल्प से, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ विजाइना. कहां से गए, विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड देन fallopian tubes. ये देखिए, ये यूट्रस का पार्ट और ये आगे fallopian tubes, and then here there is present egg. So fertilization occurs here in the fallopian tubes. लिख लो बस फटाफट से. So fertilization. What is the site of fertilization? Fallopian tubes. Site of fertilization, fallopian tubes. Only one sperm. Only one sperm fuses with egg to form zygote. But ध्यान से, इतने स्पर्म्स क्यों सिक्रीट किए, 300 मिलियन, क्योंकि बेचारे आधे तो यही विजाइना में ही मर जाते हैं. कुछ जब ये पास यूट्रस में से पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे मर जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में मर जाते हैं. ओनली फ्यू हंड्रेड, तकरीबन 100-200 स्पर्म्स 300 मिलियन में से, और 300 मिलियन के सारे हेल्दी नहीं होते हैं, बहुत कम हेल्दी होते हैं. सो आउट ऑफ 300 मिलियन स्पर्म्स, ओनली अबाउट 100 स्पर्म्स reaches the fallopian tubes and only one sperm fuses with egg. ठीक है. सो यहाँ पे एक स्टार डाल के, बट many sperms are required that secrete enzymes for dissolving egg membranes. जैसे ही बहुत सारे स्पर्म्स चाहिए है एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करने के लिए, और जैसे ही एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, वन लकी स्पर्म एंटर्स इनसाइड द एग एंड कॉजेस फर्टिलाइजेशन. एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो इमीडिएटली एग के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि अब और नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद कोई स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकता. ठीक है. कई बार बच्चे लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन, वी विल टेक अनदर लेक्चर समटाइम, कि जो ट्विन्स होते हैं वो 1 एग एंड 2 स्पर्म्स से बनते हैं. नहीं, दैट इज ए सेपरेट थिंग. ठीक है. 1 एग फ्यूजेस विद 1 स्पर्म ओनली, और अगर किसी कारण से 2 स्पर्म्स चले जाएं तो वो जाइगोट बन ही नहीं पाता, वो जाइगोट डिस्ट्रॉय ही हो जाए. सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द fallopian tubes. ठीक है जी. थोड़ा सा हम और आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, करके आना है. एंड आई विश कि आप जो है वर्कशीट करके आए ताकि हम मंडे को ये खत्म करें. ठीक. ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.